Hello, everybody. Okay, let's do the drill. Would somebody please confirm? Am I clearly audible? Okay, sounds good. Can somebody please speak up, switching on your mic so that I know that I can also hear you properly? Anybody please, just switch on your mic and say hi. Hello. Yes, sir. Okay, thanks. I should. Screen moving, it is not still. I hope so. Okay, let's go ahead. Let's fire up your workbench. Acha, my mistake. First of all, first things first. Wish you all a very happy new year. Wish you all the success ahead. My bad, I forgot. Well, very fine. Last we were seeing some utilities to manipulate the strings with SQL. Enough about numbers. Numbers में हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं. Let's go to a bit complex set of queries. I don't know if you have dealt with this kind of question so far. Have you been through? Have you been through this? There in the chat box. They are on my screen as well. What is your thought? What could be the logic here? It is saying display the details of the employee who does not have a have supervisor. तो पहले तो यही सोचो ऐसा एम्प्लॉय होता कौन होगा? ऐसा एम्प्लॉय पॉसिबल है जिसका बॉस ही ना हो? हाँ, Anshul, he himself is boss. What about she herself, Anshul? Ladies, you see a culprit here. Any lady in the house? ठीक है, हाँ पिटवा सकता हूँ मैं अंशुल. चलो ठीक है. तो व्हाट इज द थॉट यार? आई थिंक ऐसा एम्प्लॉय कौन होगा? द सुपर बॉस. यस, द ओनर ऑफ द बिजनेस. अपने टेबल में ऐसा है क्या? ऐसा है कोई? एक्चुअली देयर इज समवन. तो उसके सुपरसेशन में क्या दिखाएगा?
ऐसी वैल्यूज में क्या दिखाएगा? इट शुड बी अ ब्लैंक वैल्यू। एसएसएन हो नहीं सकता इस आदमी का, आई मीन सुपर एसएसएन नहीं हो सकता, बिकॉज ही और शी इज द बिजनेस ओनर। हियर इज जेम्स ई बॉर्ग। ओके, so what is the logic you can think upon is select, किसी ने बनाया क्या, कोशिश की? सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, एम्प्लॉय डिटेल बोली है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन हियर? इट इज सेइंग सुपर एसएसएन इज इक्वल टू नल। ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं हम, आई थिंक। पहले तो ये बताओ, ये लॉजिक लगाना आ रहा है कि नहीं? आर यू पीपल, हैव यू पीपल बिकम रस्टी? आई नो इट हैज बीन अ while since we last connected. अरे यस नो, हाँ ना, ये तो बताते रहो। अदरवाइज इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, वो तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा फिर यूट्यूब पे। इस टाइम क्यों टाइम खोटी कर रहे हैं हम? See, if you try this logic and I run this, now this one is, this is one of the most dangerous kinds. Dangerous in the sense, क्योंकि क्वेरी रन हो गया है, एरर नहीं दिया है। एरर नहीं दिया, उसने रिजल्ट दिया है दैट नो देयर इज नो सच रो, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसका सुपरवाइजर नहीं होता। एंड लॉजिकली सोचने में एक बार को ऐसा लग भी सकता है कि हाँ, ऐसा एम्प्लॉय कहाँ होगा जिसका कोई बॉस नहीं हो सकता। And maybe you will say that okay, very fine, I am done with the question and let's move to next. Actually this query is wrong. This query is logically wrong. Realize that you people have already been through R and Python, and I see that some of you, if not all, have been trained by me. And during my training, when I am the mentor, I give special attention to missing values because these are the most notorious one. प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर? आई एम आस्किंग वेदर सुपर एसेसन इज इक्वल टू समथिंग नल। नाउ नल इज रिप्रेजेंटिंग विच इज नॉट अवेलेबल। तो सीक्वल क्या लॉजिक समझ रहा है मेरे कहने से, मेरे इस क्वेरी से, कि नल जो अवेलेबल ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं सुपर एसेसन उसके इक्वल है कि नहीं है? तो इन दैट सेंस इट इज रिटर्निंग नो वैल्यूज हेयर, दैट आई कैन नॉट रिटर्न एनी रो because I cannot compare any value with another value which is not available. You people getting this? Am I making sense? निखिल, सोनू एंड राकेश स्पेसिफिकली, अंशुल एंड आकाश को हाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें समझ आ जाएगा। ओके, तो यूजुअली सभी लैंग्वेजेस में लाइक, हाँ जी, पाइथन में क्या यूज़ किया था मिसिंग वैल्यूज पकड़ने के लिए? आर में, पाइथन में किसी का ध्यान है? वहां पर भी आप डबल इक्वल टू एन ए करके नहीं करते थे? यस, there is family functions is null, is nan from numpy, or is dot na. Yes, you remember that? So SQL में भी हम equal to से compare नहीं कर सकते, the keyword is itself.
Now this query is correct. I am saying if super SSN is null. Now logically my language is correct. I am saying whether super SSN is null. Super SSN is not available. Then return that row. So now this logic makes sense to a workbench, and as it happens, it gives me the employee who does not have supervisor. Okay, I think everybody got this. I'm taking that because I'm not countering any problem here. You are not putting up any question, so I will take that as a go. नहीं, दो रो कहाँ दिखा रहा है आंसर? वन रो इज जहां पर वो एम्प्लॉय है. लास्ट रो देखो, लास्ट वो जो भी डिस्प्ले देगा. सो दिस इज टेंडेंसी ऑफ माई सिक्वल वर्कबेंच. लास्ट रो वो दिखाएगा कि यहाँ पर रिजल्ट खत्म हो गया, तो लास्ट रो ब्लैंक आ गई है. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज ऑल नल 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 नल. तो वो दैट इज नॉट रिजल्ट एक्चुअली. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक बाय नाउ आप लोग शायद एक्सप्लोर कर चुके होंगे. मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था. डिड आई टॉक अबाउट माई सिक्वल ट्यूटोरियल दैट ब्लॉग? अगर ये समझ आ रहा है कि करना क्या है लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि फंक्शन क्या लगेगा, तो हाउ टू गो हेड एंड हाउ टू एक्सप्लोर. कुड यू गिव इट अ ट्राई योरसेल्फ एवरीबॉडी? क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? फुल नेम एक ही जगह दिखाई देना चाहिए. Go ahead and give it a try yourself, and if it happens, if it turns up, try it out. Don't Google randomly because that will take much of time. Maybe you can go straight away to MySQL tutorial और वहाँ पर let's find out, try to find out. कहने का मतलब ये है कि फुल नेम आ जाना चाहिए एक ही बार में. I don't want to see like first name and last name. I want to see full name at one place. So give it a try, and if you succeed, drop your query in private chat. I will hold here for a while. Did anyone try? Did anyone succeed? Okay. What about others? Guys, are you even trying? Tell me, yes, no. या तो हो रहा होगा, हो रहा है तो मुझे बताओ, नहीं हो पा रहा है तो राकेश, इट इज नॉट डूइंग द इंटेंडेड थिंग. कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय का फुल नेम आ जाना चाहिए एक ही जगह पर. मुझे ऐसे नहीं देखना कि फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम देन लास्ट नेम. आई वांट देयर फुल नेम written like Anshul Singh, Alok Chauhan, and so on. Not different columns.
let's see. Okay, I'll try to help you one more time exploring things. There is MySQL tutorial. Let's go to this portal and let's try to find कि हमें करना क्या था. What do I want to do is eventually I want to say I want to combine string columns. Let's look for it, and it is showing me some suggestions. Natural sorting using order by. Then there is group concat function to concatenate the strings from a group with various options. Seems interesting. Group concat. आओ देखते हैं. And then there will be versions of this concatenation. क्या क्या यूज हो सकते हैं, कैसे कैसे यूज हो सकते हैं. So there is syntax and this and that and all. What I mean to say is try these things, try to explore, hit and try. The good thing is nobody is watching you. So the more errors you make here while practice, more robust will be your coding skills when you will be in technical rounds. You will know what works and what doesn't. मेरे को अभी मालूम है कि अगर मैं ग्रुप कॉन्कैट करने की कोशिश करूंगा अभी एरर आ जाएगा. आई नो दैट बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस, बट keep looking for these things, no? For now, it is understood. How it can be done is the function name is concat. You see, auto suggestion. I want to concat first name, last name, and say I want to call it an alias. I am calling it full name. From table employee. And let's try this. Is it doing the intended job? Will it do the intended job? या कुछ हेवायर हो जाता है? अच्छा करके देखो. अभी तो क्वेरी भी लिख दिया मैंने. You just try and tell me that what is not right still. See the result of this query. And apprise me on what do you still see which doesn't seem right. Okay, so you realize that अगर मैं इसको एज इट इज रन कर दूं, इट इज वेल फुल नेम हो गया है, बट फुल कॉन्कैट किया था हमने, तो कॉन्कैटिनेशन इज डन विदाउट स्पेस. So any idea what could be done to have a proper space between them? So another thing which you can look into is the help document. Did I mention that? Suppose I don't know something about concat function. मेरे को ये पता है concat function है और जो काम मैं सोच रहा था वैसा हो भी रहा है, लेकिन exactly वैसा नहीं हो रहा जैसा सोचा था. So let's see help of concat function. If I run this, what has happened? You notice? Let's copy and paste that because वहाँ पर result वाली space में it is not entirely visible. So I have just select this from this arrow here, copy, Control C, and paste over in your script file. And it is telling me everything, the syntax and what's what. Try doing it and do apprise me. What do you find out?
That's fantastic, Akash. You have noticed it already. See, the syntax is telling you that you can use multiple strings. And how do we represent strings? By quote sign. कुछ null होगा तो it will return null altogether. Let's see, there is a syntax given here. यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Let's try this out. This seems nice. It is giving me a syntax that if I remove this MySQL and MySQL, this is actually this is syntax of shell. If you are running it in shell में वो ऐसा दिखेगा. यहाँ पर क्या दिखा रहा है वो? It is trying to concatenate three strings my and s and ql, and if I concat this, oh, it is taking all of this nonsense into account. So see, it is giving me hint that I can concatenate as many strings as I want. So let's try this. I want to concatenate fname, comma, but in between I want a space. So I'll represent space in double quotes and comma, and then there is a third string which is lname. And let's run this. And as it happens, all of them in one good place. बढ़िया, nice Anshul. So I hope everybody got this. Here comes another question. Let's try this one. Try this. You realize what's happening here? This question, had it been,
it is asking to display the SSN of manager. Can you freeze? Can you point out which table it is referring to? किस टेबल से इसको आंसर किया जा सकता है इस क्वेरी को? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट? क्वेश्चन देख के ये समझ आने लगना होना चाहिए अभी तक. SSN टेबल, ऐसे तो नाम रोशन होगा मेरा. SSN नाम कौन सी टेबल है? SSN, देयर इज नो टेबल कॉल्ड SSN. Nikhil, you are concatenated. Pay attention to the question. What question is asking? Actually from department table. Yes. क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दैट मेरे को उस मैनेजर का एसएसएन देखना है एंड ये देखना है कि मैनेजर ने किस ईयर में चार्ज लिया था. तो ये कहाँ से पता लग रहा है? डिपेंडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल. एक्चुअली फाइनली डिपार्टमेंट टेबल से पता चल रहा है, बाकी और किसी तो पता नहीं चल रहा ना. एम्प्लॉय से, इससे उससे कहाँ पता चल रहा है? सो देयर इज ओनली वन टेबल विच हैज start date of the manager and then we have SSN of manager. But here comes the trick. It is not asking you for date. Had it been date, it was very straightforward. Had it been date, to select, okay, it is called manager SSN, MGR start date, from department table, and we could have been done with it. But the trick here is, उसने बोला है डेट नहीं चाहिए. The question wants you to fetch year only. Remember, जब हम ये डेटा एंटर कर रहे थे, we took ample care in defining data types. I recall I spent almost half an hour to 1 hour talking about these data types. Remember this? Fname in varchar, minute in char, what should be char, what should be varchar, what should be what and why. अरे बोलो, बातचीत है ना ये. We discussed this in ample detail for a reason. तो ये क्यों ध्यान रखना जरूरी है इन चीजों का? बिकॉज here we made sure that our life is easy henceforth. This department table, when we created this start date as data type date. When something is date, SQL voice is cracking, and I see that from two of you. Is it for everybody? Did it happen? Okay, tell me, till when I was with you people, where did I lose you? I think
I was talking about data type date. Okay, well, so remember when we were doing some DDL, we were trying to define the data, that how this data should be kept in our database or our server. We carefully chose data type date. When something is date, SQL knows that certain functionalities should be applicable if it is date. If it is any random character, then those functions don't work that way. If something is number, certain functions should work on numbers, yes or no? If something is number, so sum, average, these kind of things should work on them. Whereas if something is character, sum of two characters doesn't make any sense. So similarly, when something is date, certain functions become available to us. For example, there is a function year. इस फंक्शन का काम क्या है कि अगर कुछ डेट है और उसमें से मेरे को सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो अपने एनालिसिस के लिए, then this year function fetches the same. And if I run this, you see, if it was date, it knows that I have to fetch year from this date. Done. Please give me a heads up when you are done with this. Hanji. Now you may be wondering, what are these functions and where do they come from, and how do I know that there is something called year and it is applicable on date? Guys, again I would say, get your expectation right. Perhaps I said so when I was beginning this with Jaipur guys. ये इतनी कहानी क्यों कह रहा हूँ? Because I would want you to, if you really are interested in learning, start doing these things by yourself. For example, I don't know you have explored it or not. Otherwise, you might, if you took sufficient interest and you invested sufficient time, you would have known this by now. ये देखो, दिखा दे रहा हूँ, ये रखे सारे ऊपर ही. You go to MySQL tutorial, you go to this functions tab, and there are all these functions given. Aggregate करने के लिए कौन से function लगते हैं, comparison के लिए क्या लगते हैं, what are the most frequent functions in whatever domain, they are very cleanly given over here. Strings के ऊपर कौन कौन से function जल्दी जल्दी काम आते हैं usually. Date, go to date, here they are. What are the date functions? They are the several date functions which will come in handy. There is cur date, which returns the current date. There is date diff, which calculates number of days between two date values. Day, to fetch the day. There is month. किसी ने डाला था अभी month कैसे निकलेगा, तो उसके लिए month function है. There is weekday, which will return the weekday index here. So, don't try to study SQL. Try to play around these things. Just play around, no? Run something nonsense. Why you are waiting for questions? Try doing our think on these lines, that maybe I need to fetch this. What if I need to fetch this? What would be the logic if I need to fetch this?
फेयर। जॉब भी डेटा एनालिसिस मिल रही है फॉर फ्रेशर। अरे मिल रही है, पकड़ो ना। क्या तफरी में आ जाते हो। नहीं मिल रही सर। कहाँ मिल रही है सर? नहीं, वो आकाश डाल रहा है ना, अभी मैं तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था। आकाश कह रहा है जॉब भी डेटा अच्छा साइंटिस्ट। अच्छा, एक्चुअली सर। हाँ सर, मिलती नहीं है सर। चलो जी, वेरी वेल, लेट प्रोसीड टू। सो फार हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हमारे डिस्प्ले भी आ रहे हैं जैसे सोच रहे थे वैसे आ भी जाते हैं, नहीं भी आ जाते हैं। नाउ समथिंग विच इज़ पॉपुलर, which is every now and then required is like here, question 21. Can you think of what is required here? Can you think of what is requisite here? So the first question comes, why it is required? Why can't I simply देख रहे हो ना, एम्प्लॉय टेबल अगर मैं सिंपली एम्प्लॉय टेबल प्रिंट कर दूं, आ तो रहा है रिजल्ट। आपको एसएसएन चाहिए तो एसएसएन आ जाएंगे। तो हु इज आस्किंग अबाउट दिस डिसेंडिंग ऑर्डर? नाउ देयर कम्स सम practical implication of SQL querying, and maybe let's understand this from the user's perspective. सपोज मैं आपसे बोलूं कि एम्प्लॉय की डिटेल ले आओ, तो ये लो ले आए, आ गई डिटेल, क्या दिक्कत है? बट थिंक अबाउट इट, माना मैंने तुमसे बोला नहीं था, बट इफ इट इज इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, व्हाट डू यू से? यूजर विल लाइक इट, नो? थिंक अबाउट इट, यस और नो? Maybe it is in alphabetical order, maybe it is in order of salary, maybe it is, females first and male later, maybe it is according to birth date or joining date or something. तो ऑर्डर तो आ ही रहा है। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन टेक राउंड्स, तो पता है, एक क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करेंगे, एंड देयर विल बी दिस एंड देयर विल बी दैट। तो थिंक अबाउट इट, व्हेन आई हैव टू ग्रेड 10 पीपल डिपेंडिंग अपॉन द सेम क्वेश्चन, अगर मैंने किसी को 10 नंबर दिए हैं कि ये सबसे अच्छी लग रही है, बाकी से कम ही आने वाले हैं ना फिर उससे। यस और नो? एक क्वेरी अगर मेरे को पसंद आ गई किसी बात की वजह से, और उसको दे दिया दैट दिस सीम्स टू बी 10 on 10, तो बाकी सबके नंबर कटेंगे ना, जो कुछ भी कम रह गया उसमें। एक यस सर। नंबर, दो नंबर, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हेन देयर आर 50 एप्लीकेंट्स,
एक नंबर तो बहुत है तुम्हें अंदर बाहर करने के लिए. So this is something which is may not be asked. हो सकता है डायरेक्टली पूछा ना हो, बट इट इज ऑलवेज गुड कि आपका जो डिस्प्ले आ रहा हो दैट शुड बी इन वेरी क्लीन ऑर्डर ऑफ समथिंग वेरी लॉजिकल. तो ये सोचेंगे कैसे आप? थिंक अबाउट बीइंग इन द शूज ऑफ यूजर के जिसने डेटा मांगा है वो क्या देखना चाह रहा होगा. अगर इस ऑर्डर में जाए तो बेटर लगेगा उसको. So for these kind of things we use select. For now I am choosing all the details asterisk. अच्छा asterisk नहीं SSN बोला है तो SSN ओके. बट सिंस आई एम यूजिंग सैलरी इन ऑर्डर तो दिखना तो चाहिए कि सैलरी का कुछ ऑर्डर आ रहा है. इज इट सो? अगेन क्रैकिंग. somebody please apprise. Is it cracking or clear? Is it clear? Voice is clear to everybody? Okay. So SSN, I want to display SSN because it is asked. Salary, because salary के order में sort करूँगा तो salary भी दिखना चाहिए कि order में sorted है. From employee table. And then there is, this is called order by clause. I want to order it by something. Nikhil, might be glitch at your end then. I see that others seem to be listening fair enough. अरे सुनाई दे भी रहा है. Is it okay? Is it fine now? Rakesh, it becomes very difficult for me that in every session, if a new person joins in, and then how am I supposed to share the code and share everything what has not been what you people have missed. All I can do is I can send you the mail, whatever code I am running. So you can ping me your mail ID and I'll later send you this code. Okay. So select Sally assistant from employee. The clause is order by. I want to order it by salary, and if I do it by salary, well, it is sorted in by default. It is sorted in ascending order of salary. Question asks for descending order. The keyword is desk for descending. So if you need descending order, so order by the column name and
desk for descending order. So that's pretty much straightforward. Okay, here's question number 22, and try it yourself and see. Uh, okay, not to be tried by yourself. Here, question 22, along with the query, run the query and try to figure out what's happening. Do you see? Is it working all good, or is it something, something fishy going on? Check this one out and try to make sense of the result. What is the result here? What do you see? What is the trick happening here? Yes, actually, finally. What's happening here is I am saying sort the works on table based on P number and hours. So when I am saying order by P number, comma, hours too, both of the things. You see, it will try to order the table by the first preference, which is to project number. But when project number is same, that means project number is same here. So it will use hours as the tiebreaker. Then the first preference will be project number. You see, project number one, project number one. Okay. So both are the same thing. But which one should come first? So now second preference goes to hours, and hours will decide which one should appear first. So that's happening here. Make sense? Yes, sir. Okay. Seems sorted enough. Let's try this question number 23. Try it yourself. I'll mute myself and hold here for a minute. I'll let you try. And if you are done, then drop me the query in private chat. If you are not done, then tell me what is the issue you are facing. Issues can be open. If you are sending me the solution query, that should be in private chat. Okay, let's try. Anji, what do you say? Any luck? Anybody?
There comes two things here. I was not expecting that you would know this. What is the question asking? That display the number of employees in each department in increasing order of number of employees. So actually there are not one, actually there are two problems at the same time. One is it is asking number of employees not in a table, it is asking per department. So there comes the notion of group by. I hope everybody is familiar with these continuous and categorical variables. इसके बारे में तो बात नहीं करना है मेरे को. Everybody, huh? Just please give me a quick yes, everybody. I mean, matlab not yes forcefully. if you really know it, then fantastic. If you know, don't be modest. If you don't know, don't be shy also. You can बिल्कुल बेशर्मी से बता देना मेरे को नहीं पता है, तो मैं बात कर लूँगा. Okay, very fine. So grouping by is always by some categorical variable. Guys, can we break for a while? There is some pinging and some nagging going on continuously, so maybe I'll respond this. I'll take some 5-10 minutes and I'll respond for one good time. So okay, thanks. So it is some. I should leave a note. It's almost 8:53, 8:55. Okay, okay. We shall continue at 9:05. That'll do. So please be back in time. If you break off, you don't need to drop from the meeting. Stay on the link. Just keep your second, and please be back in time. See you guys. Hi again. Hope everybody is back. Please somebody confirm. Just give me a quick ping in the chat box so that I know how many of you are already here. Please guys, everybody, I see only two pings. People getting lazy already. Well, I can understand. It must have been a hectic day. But the same goes for me too. Okay, nice try, Deepak, but okay. Okay, that's something good that you tried on your own. So I was saying that when there is a problem of like it is asking me do something according to a categorical variable. In this case, it is department. It wants something to be aggregated, like number of employees. It could have been average salary. It could have been maximum salary. It could have anything. But it is asking me to do it according to some categorical variable for various categories in a categorical variable. That's what it is asking me to do. That's where group by clause comes into picture. So it is asking me, suppose just like table, it is asking me to count something. Well, so I need to count. So just one little flaw in your query, Deepak. What do we count? Yes, sir. I recall I discussed that. You What should do we not count count? anything. Don't count whatever you like to count.
So let's not count F name, let's not count last name. SSN. Yes. When you count, you should be counting the primary key by thumb rule. If you are unable to count the unable to identify what primary key should be here, like here, because since we set this data up, so we know if I click on the table name, it is showing me that what are the columns, it is giving me a little description, and the primary key is underlined here, that this is something primary key here. You see the keyword PK. It is not that Amir Khan playing alien PK. It is primary key. Yes, So sir. either we should use primary key, and if you are not very sure, let's count number of rows. So for now, I am assuming that I don't know primary key, so I am counting number of rows being on a safer side. From which table? Well, employee table should give this information away. And that's where the game is. Group by, I want the count to be shown category wise, not for the entire table. I want it to be according to categories in a categorical column, which here in this case happens to be DNO, department number. If I run this, it is showing me how many employees are there in different departments. Well, department number is not coming up. We can fetch it and let's include it. And now we see which department number got how many employees. Just like you did group by and summarize, SQL is good person. It does not need summarize. It already know that when there is group by, it will only make sense when there is something to summarize. So far so good. Everybody getting this? Should I move to the next part of this problem? Well, Anshul, that's quick. Thank you. What about others? अरे यार बोलो बात करते रहो मेरे से. Okay. Uh, okay. On that note, maybe you are very few people, so maybe I can ask you people, how is it going? Am I going way too fast? Am I going way too slow? Is it boring, confusing, interesting? There can be only three possibilities here. सर सब ठीक ही है, सब समझ में आ रहा है सर। Okay, that's good to hear. मैंने भी सर वीडियोस देखे थे, मतलब जैसे आपकी क्लास के बाद, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, ये जॉइन ये सब कुछ वगैरह सब देखा था मैंने, तो आई फाउंड इंटरेस्टिंग। और ऑल्दो अगर पता नहीं, ये वीक में 2 क्लासेस है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, वीक में 5 क्लासेस लो, जल्दी खत्म करा दो। Okay, very well. Let's conclude this question for now. Let's conclude current session with another couple of questions quickly, if there is no query. एक प्रॉब्लम आया था ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय तो हो गया. नाउ मेरे से कुछ और भी पूछा है. इट इज आस्किंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ असेंडिंग. तो what do I need to do? I need to do an order by. Now order by what?
there comes my first dilemma. What do I need to order by this? So always remember, when there is clause like this, order by, yeah, there is some condition, it is always about the calculated field. देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इसी पे कह रहा है ना कि ये जो काउंट आया है, अकॉर्डिंग टू दिस काउंट इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अभी फिलहाल क्या है, वो बाय डिफॉल्ट ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट व्हाट इफ इट वाज आस्क्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो बिना ऑर्डर बाय के डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं आ रहा. आई नीड टू ऑर्डर इट बाय, सो दैट्स फॉर वन. तो ऑर्डर बाय व्हाट, ये तो मुझे पता है, ऑर्डर बाय आ जाता है. डी नंबर से. डी नंबर से करूंगा तो डिपार्टमेंट नंबर आएंगे 541, तो वो तो डिपार्टमेंट का नंबर हुआ. मुझसे बोला है हाँ. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. अच्छा, हमें काउंट चाहिए. यप. ओके. So one method could be that I mention the column number which appears in the result. रिजल्ट में क्या कॉलम नंबर आता है यहाँ पर, जो मेरे को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए था, इट इज कमिंग एज काउंट ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट क्लोज. So I will have to mention that as it is. However, this doesn't look nice. अगर ऑर्डर बाय नहीं भी होता तो भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, काउंट एस्ट्रिक. हाँ सर, तो नाम दे सकते हैं ना इसको सर, एज करके. हाँ. एग्जैक्टली. So one thing is, always make good use of alias facility. When you can give alias, yes, give it. Now it is simple. I don't have to mention count kind of thing. I will just mention number of employees. Now still, even after giving everything right, it is showing me this red cross which is an indicator of error. लेकिन मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो रन करे बिना मानूंगा नहीं. मैं अगर रन कर भी दूंगा, error. The error is because I am ordering by number of employees. But think about it, number of employees column कब calculate हो रहा है? When it is already grouped by D number. लास्ट में होएगा सर. Yes. D नंबर से ग्रुप बाय होने के बाद तभी तो कैलकुलेट हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तभी तो ये कॉलम आया. तो उससे पहले ये ऑर्डर नहीं हो सकता. तो रिमेंबर द सीक्वेंस. इट इज ऑलवेज सेलेक्ट फ्रॉम. If there is where condition, you put in where condition. If there is no condition, you move on to group by. If there is group by, and finally you can order it by. Okay, हमने डिक्रीजिंग बना लिया था, तो मे बी डेस्क. Now this is one complete query. Fair, all in all good. यस सर. You guys trying it by yourself. If you are very, if you are, uh, already tired and don't want to type in, do tell me. I will drop it in the chat box. नहीं नहीं सर, इसमें क्या मेहनत बचेगा, इसमें तो मेहनत लगेगा ही नहीं, तो क्या बचा है इसमें. Okay, here is the question for you, and I think होना चाहिए. Give it a try. I'll mute myself. Give it a try, and drop me the solution in private chat if you are able to do it. If you are you face difficulty, then drop me the problem that syntax error आ रहा है या क्या error आ रहा है, if it happens. So go ahead. Okay, I see response from Deepak. What about others? Able to think of something? Okay, I get something from Anshul.
Well, it is getting easier and easier for me. Only two people to look at. One is Nikhil and other is Sonu. Yeah, yeah, Nikhil, take your time. Take your time. You see, when you try yourself and struggle, it gives a certain sense of accomplishment. And that's wonderful. जिन्होंने feel किया है, they know which which feeling I am talking about. And in case you are done, here it goes. So Deepak and Anshul, you can try next question. Here it goes. Meanwhile, you can attempt this. And again, if you solve this, drop me your query in the private chat. टेबल रीड नहीं हो रहा सोनू। सोनू क्वेरी भेजो, अपना क्वेरी क्या लिख रहे हो जिससे टेबल रीड नहीं हो रहा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। Okay, Deepak strikes again. But why F name, Deepak? Yeah. Sonu, what is the problem? नहीं सर, आपने बोला एम्प्लॉय नेम लेना है ना शायद इसके अंदर। क्या ना ना, एम्प्लॉय अमाउंट नेम लेने से गलत हो जाएगा। इट इज ओनली आस्किंग जिन लोगों की सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज क्या होता है ऐसे लोगों का। अच्छा अच्छा, तो फिर हट फर्स्ट जाएगा सर। वर्जन इज ऑलरेडी सफिशिएंट।
Sonu, ठीक है what is the problem you are facing? I don't see your query. I don't see your. Please switch on mic and just speak. Sonu, you there? यस सर। हेलो। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? टेबल रीड क्यों नहीं हो रहा? हेलो सर, वो पूरा डेटाबेस में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, पता ही नहीं क्या हो गया। मैंने रिफ्रेश किया फिर भी। एक मिनट, एक मिनट। आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर। शेयर द स्क्रीन। एक वेट हो गया। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल सब ठीक ठाक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेलेक्ट एवरेज सैलरी। हाँ, आगे तो लिखो क्वेरी, कौन सी टेबल, कौन सी कंडीशन। यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज सैलरी फ्रॉम विच टेबल? ले, पहले टेबल नहीं रीड हो रहा था, अभी सारे काम रीड हो रहा। मीटिंग ड्रॉप कर दी, चलो ठीक है। बाकी लोग। अच्छा, दीपक एंड अंशुल, यू हैव ऑलरेडी सॉर्टेड इट। तो व्हाट अबाउट निखिल? निखिल, वर यू एबल टू सॉल्व इट? Department wise average. So it wants me to calculate average of salary, obviously from employee table. लेकिन कैसा एवरेज चाहिए? डिपार्टमेंट वाइज। तो ग्रुपिंग बाय डी नंबर। एंड सिंस डी नंबर देख रहे हैं तो यहाँ भी दिखना चाहिए, तभी ना पता चलेगा किसका एवरेज कितना है। नाउ इट लुक्स कूल ऑल इन ऑल। वेरी फाइन। नाउ अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आप लोगों से, ये क्वेरी ठीक है, इसका रिजल्ट भी ठीक है, एंड यू नो नो बडी कैन क्रॉस ओवर इट। इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। बट थिंक अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू टाई ब्रेकर। एक क्वेरी वो था जो अभी लिखा था, एक
क्वेरी ये है जो अब लिख रहा हूँ। And I hope you realize which one is going to win that extra 1 mark. Makes sense. Hope you realize. Sonu, is it guesswork or are the tables working now? बंद करके दोबारा चालू किया था, फिर अभी रन हो गया। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। Got it. Sometimes what happens is ये जो कनेक्शन सर बनाते वो हैं ना, बंद this local instance, यस सर। ये हाँ ये जो यहाँ से आप SQL कनेक्शन बनाते हैं, sometimes this connection drops off. फ्री सोर्स वर्जन यूज कर रहे हैं ना, पैसे तो लगे जी नहीं। सर। हाँ, तो कोई माई बाप है नहीं इसका, तो कभी ओके कभी सर, ग्लिच करते हैं ऐसे सोर्सेस। आई एम श्योर तो फिर जुपिटर इसको नोटबुक। बंद करके दोबारा चलो ठीक है, ठीक है। तो फाइनली इट इज वर्किंग। हाँ क्वेश्चन 25 says among the people who draw 30,000 salary, what is the department wise average? अभी क्या प्रॉब्लम है, एवरेज सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों की चाहिए जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। What is meant by this question is that with all these ruckus, there can be inherent condition also. क्या बोला है, जहां सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 30,000, पहले तो डेटा उतना ही निकालो। आई होप नाउ दिस सीक्वेंस विल मेक सेंस। अदर देन सेलेक्ट एंड फ्रॉम, बाकी सबका सीक्वेंस बिल्कुल सिंपल है। सेलेक्ट एंड फ्रॉम में ऐसा लगता है कि फ्रॉम पहले आना चाहिए बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू फिक्स टेबल, बट इट इज द वे इट इज। तो चलो, वी फिक्स द टेबल फ्रॉम, then we select what we need to calculate from that table. Very fine. Next comes is the condition if there is any. तो here the condition is कि पहले ये जो पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ उतना डेटा चाहिए जहां ये कंडीशन ट्रू हो। अब जब वो डेटा आ गया जहां कंडीशन ट्रू है, लेट्स ग्रुप बाय व्हाट, some categorical variable. In this case it is department number, and when it is grouped by, let's order it in, well, some order, descending or ascending of something which makes sense, which makes the result presentable. And we run it. There it goes like that. All good. One final question for today, and we'll be done with this, done with the day.
Here it goes. Try to attempt it yourself and see if it is doing just fine. Go ahead. Again, the same drill. If you solve it, drop the query in private chat. If you face any difficulty, do let me know. Okay. I received answers from all but Sono, and all are conceptually wrong. Okay. Now let's include Sonu. I received her answer too, and now all the answers are conceptually wrong. I'll show you why. More or less, everybody has done it this way. Yes or no? You are trying to find out SSN of the employee who has worked for at least 20 hours. I'll show you what is wrong. Again, a very dangerous case. Reason being, query is executing. You will not face any error. And you may think, it may get you into thinking that your query is running perfectly, you are getting the answer, and you are done with this. Technically, you are out of the interview. Let me show you this works on table. You see this employee, or maybe this employee. You see this employee, his or her SSN, whatever it is. Yeah, this is the same person. And as it happens, this is the same person too. And the same person. This employee has worked 10 plus 10 plus 10 plus 10, 40 hours. This employee has worked for 40 hours but on different projects. That's the mistake of him or her. आपके क्वेरी में ये एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं हो रहा. देख लो रिजल्ट. तुम्हारे हिसाब से इसने 20 घंटे भी काम नहीं किया है. काट लो पैसे, लगा दो पेनल्टी, रोक दो प्रमोशन. अरे काम किया है. इट इज जस्ट दैट कि उसका काम अलग अलग रोज में मेंशन्ड है बिकॉज प्रोजेक्ट नंबर इज डिफरेंट. नाउ थिंक अबाउट इट. इट इज नॉट देयर मिस्टेक. नो, you think about it. Being employee of Marticus, I may be maybe you know right now I'm taking care of I'm acting in capacity of trainer myself. Sometimes I have to manage the trainings. Many of the times I have to take care of placements also. And okay, let's not go into that. That is हाँ, तुम सोचोगे कौन सी नौकरी कर रहे हो आप, किसी ढंग की जगह काम करो सर. तो but it happens many a times. I have to handle several things. तो इट इज नॉट मिस्टेक. नो, तुम बोलो कि ये आदमी तो हमें 3 घंटे में नहीं मिलता है अपने डेस्क पे. अरे वो इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज उसको कभी गुड़गांव जाना पड़ता है, उसको कभी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. सो दैट इज व्हाट इज रॉन्ग इन योर लॉजिक हियर. What else could have been done? I am showing you.
Even distinct won't work, Anshul. Maybe you can give it a try. This employee will still not qualify. कहाँ गया जो था वो? देख लो करके, वो अब भी नहीं दिखेगा तुम्हें. ये बंदा 333 444 ये अब भी नहीं आ रहा है. बिकॉज गलत क्या हो गया है? Rather than selecting SSN and selecting hours, you should have chosen total of hours. No, मैं कह रहा हूँ let some hours from works on table. हाँ, ये कंडीशन अभी पीछे रखते हैं. चलो, I am saying group it by. Let's group by ESSN. तो क्या होगा? अब मेरे को टोटल ऑफ आवर्स दिखेगा फॉर ईच ESSN. तो यूनिक वाला प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया ना अंशुल? Now I'm treating SSN as a categorical variable and for each category of SSN यानी हर SSN के लिए I want to see the total of hours, and if that be the method, I'll see. Well, very fine. Total of hours for each of the employee number. Nice. अभी कंडीशन नहीं लगाया वो मेरा, वो कंडीशन फिर सोचेंगे. बट फिलहाल इतना काम तो हुआ. I'm calling it SSN hours. Let's give it an alias. I'm calling it working hours. And yeah, you can do n number of fancy things now. Let's order by 2. I'm not happy yet. Let's order by working hours in descending order. See, all good. So, I kept it a bit slow knowingly because there were certain things, this is, uh, this is kind of the learning curve. ये पहली बार आया था 10th के बाद 11th में आप लोगों के सामने. Suddenly the new learning was a few notches up. But once you took care of that, 11th में अगर वो झटका झेल गए तो 12th is easy again. Because that steep climb is taken care of. So today was that kind of thing. We were just around the corner. And I can just hope that it went well. Okay, it's almost 10. But okay, before I take your leave, maybe I can take a couple of questions quickly if there is any. So please, over to you if there's any question. If there's no question, please do let me know even that there's no question.
Okay, I got a couple of questions, and well, they are not very technical. Videos, certainly, Anshul, I will upload on the playlist. And Nikhil, okay, that sounds good. If there is no questions, it can go two ways. या तो बढ़िया समझ आ रहा है या देला समझ नहीं आ रहा. I don't know which is the case. I would prefer सर to keep it. रैंक और डांस रैंक के बीच में भी थोड़ा मतलब है सर वीडियो में एक्सप्लेन Rank and dance rank, see, it can be, since this is this is kind of not your curriculum kind of thing. तो इनफैक्ट आई एम आस्किंग यू पीपल के अगर आप लोग मेरे को कुछ बता सकते हो कि किस बारे में बात करना है तो मैं वो बात कर सकता हूँ. इफ आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप. तो रैंक डांस रैंक ये आई कैन टॉक अबाउट दैट, पूछा नो था प्रॉब्लम. सर, जो एक्चुअली इनके भी ज्यादा लास्ट ईयर एक महीने तो उसमें पूछा था एक्चुअली हाँ, डांस रैंक और रैंक और डांस रैंक पे क्वेश्चन हो जाता है. एंड हाँ एक्चुअली अरे जॉइन के बारे में पूछा था जॉइन का तो बता दिया था उसके बाद में फिर ये रैंक और डांस रैंक पूछा था उसने तो उसमें थोड़ा पता ही नहीं था वो तो ये वाला रैंक डांस रैंक पे क्वेश्चन हो जाता है. इनफैक्ट व्यूज एंड इंडिसेस पे भी क्वेश्चन हो जाता है. बट सी, ओके, आई विल ट्राई टू टेक दिस अप. I'll try to take this up as many things as possible. रैंक डांस रैंक तो सर बस एक जैसे कोई सैलरी वाली टेबल पे भी बता सकते हैं हम हाँ हाँ, बिल्कुल कर दूंगा. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम विद दैट. दैट आई हैव बीन मैं तो बार बार पूछ ही रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पूछना है कुछ पर्टिकुलर, डू लेट मी नो, जस्ट गिव मी हेड्स अप एंड मे बी आई कैन टॉक अबाउट दैट रादर देन मी गेस वर्किंग के क्या बताना चाहिए. और एक इंडेक्सिंग पे जैसे आ जाता है इंडेक्सिंग मतलब क्लस्टर जो इंडेक्स हो व्यूज के ऊपर इंडेक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. हाँ ये दो तीन मैंने देखे मतलब जो पूछ गए उस पे जब मैंने दिया ठीक है, वेरी फाइन, सर्टेनली इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुमारो इज सम अदर एंगेजमेंट केम अप जस्ट नाउ. So maybe day ओके after tomorrow I will connect with you. यस सर And oh my goodness, my laptop is also saying goodbye now. चलो ठीक है. Well, Anshul, point taken. No problem. ये ओके Okay, on ओके that note, guys, very well. So there is थैंक nothing यू left to say other than goodbye and good night. Take care. सर या I'll connect again with you soon. You will receive my ping. ओके Okay, guys. Take care. Bye bye and good night.